So good evening, everyone. Myself, Vipul Dalal, and I'll be handling the subject data warehousing and mining. Okay, just before that, do we have any students other than comms branch? Yes, sir. Okay, one. How many? Any other? Yes, sir. Okay, fine. So the subject is almost same, 95% same. There are no major changes. Okay, so this subject is important from in two aspects. Those who want to go ahead in the direction of data analytics, for them it is very useful subject. And those who want to go into the direction of machine learning, deep learning, data science, okay, etc. For them also this subject is very important. Okay, so it is basic fundamental subject which gives you beginning in the domain of data analytics, big data analytics, data science, machine learning, deep learning. All right, so basically the subject has two parts. We can say data warehouse part, which is slightly smaller part, and more emphasis is given on data mining. Okay, so usually like I have gone through various syllabi, and I found that the module number 1 in comms branch as well as other allied branches, the first module is on data warehousing. Okay, so we'll start with module number 1, data warehouse. Okay, I want to make this particular our sessions more interactive. Okay, like bi-directional. It should not be unidirectional. I keep on speaking, it becomes monotonous. Okay, so I want your interaction also. Whenever you have some doubt, okay, you unmute yourself. You can ask your doubt if you have any difficulty, particular topic not understood. Okay, so I will repeat it, right? And in data warehouse part, we don't have much like sums and algorithms. It is basically more conceptual. In data mining, we have more of like algorithms and sum solving, etc. Okay, so I'll be using whiteboard. I'll be using PPT also wherever required. I'll be using PDF also wherever required. Okay, so I will keep on switching between these three usually. Okay, so like data warehouse is more conceptual. I'll be using a whiteboard, right? So can we start? Yes. Is my screen visible? Yes. Okay, fine. So there may be some slight network delay also. All right, so initially we don't require screen as such. So in this particular module, we'll be talking about data warehouse. What is data warehouse? Why data warehouse is required? Okay, what type of architecture a data warehouse system has? Okay, how to design data warehouse schema? Okay, and so on. Okay, what are the applications? What are the different operations you can do in data warehouse? Okay, so let us start with very fundamental thing. Why do we require data warehouse and what is data warehouse? Okay, so before we see how, why do we require data warehouse or what exactly data warehouse is, we have to understand its requirement. Okay, so basically data warehouse is used for analysis of business data. Okay, you can consider any organization. Okay, let's say for example, ICICI Bank, any banking system or any other organization. Okay, which has like any airline system. Okay, or even any college which has so many students entering. Okay, so that data. So you have any particular huge amount of business data, and if you want insights, if you want to analyze this business data, then you require data warehouse. Okay, fine. So in every organization, there are two types of systems. The first systems or the first set of systems is called operational systems. Okay, what is operational system? So like whenever we go for any kind of say reservation, okay, let's say I went to a multiplex and I'm booking a ticket for a particular movie. So the person sitting on the counter, he is using some computer, some system. Okay, he is entering that this particular ticket is booked. He collects money. Okay, maybe by a debit card or credit card or maybe by cash. So whatever transaction happened, that transaction is entered into the system.
Okay, this system is operational system. So try to understand, every organization requires operational system to run the business. Okay, तो जब तक operational system होगा नहीं, ऐसे transactions हो नहीं पाएंगे, and without that business cannot run. Okay, so to run the business on daily basis, you have to execute large number of transactions, and to execute those large number of transactions, we require operational system. Okay, but we also have to analyze, we have to monitor the business, how well business is doing. Okay, so if you want to monitor the business, you require something called information system. All right, so I repeat, what are the two types of system we require? The first is called operational system. What is the use of operational system? Yes, can anyone tell me how operational system is used? To gather data from the user. No. That's what. See, unless until you reply this way, I'll not understand whether you got this particular topic or not. Okay, that's why I'm asking question. Operational system is used to run day-to-day business activity. I give you an example that I'm booking a movie ticket. Okay, so that person sitting on the terminal, he will carry out a transaction. Okay, 4 tickets booked for this particular show, from this row to this row, this number to this number. Okay, this is the amount received, and that data is entered into the system. Okay, so one transaction got executed. Okay, similarly, suppose if I book a flight. Okay, so again the person sitting on the counter will carry out one transaction, that this person has booked this particular flight, this is the seat number, from this source to this destination on this particular date, on this particular time. Okay, so that is a transaction executed. So execution of this transaction allows that organization to run the business. Is that clear? Yes, sir. Okay, so operational system is used to run day-to-day business activities. Okay, run day-to-day business activities. Okay, now with the help of operational system, when this day-to-day business activities happen, a lot of data will be collected also in the database system. But the primary goal is not data collection. Primary goal is to make business happen by executing various transactions. Okay, fine. Now, if you want to monitor the business, how good the business is doing, whether there is some, okay, if you consider some company which is selling the products, suppose mobile phone, Samsung, it is multinational company. Okay, so in which particular country, in which particular area, the sale of particular mobile version is going down. Okay, they want to perform this type of analysis. Okay, so that they can improve the business, right? So if you want to monitor the business, then operational system is not suitable, because operational system में क्या होता है, हर एक transaction का detail रहता है. That transactions detail is not sufficient to perform monitoring of the business, to perform any kind of analysis of the business. Okay, so to do that, we require second type of system, which is called information system. Information system. Okay, so what this information system will do? This information system will collect data from all these operational systems. Remember, operational system need not be one computer. It is never one computer. Okay, each organization has so many sections. And if it is multinational company, then like there will be thousands and lakhs of operational systems where transactions are happening. Okay, so even if you consider a very small organization, consider a single organization, single company, they also have account section, HR section, okay, then production section, and so on. The people working in each section, they perform certain operations to
carry out their business activity day to day. So they work on operational systems. Is this part clear? So this data, which is used in operational system, is not suitable to perform any kind of analysis or to monitor the business. And for that purpose, organization requires information system. So what is information system basically does? First of all, it will collect data. Collect data from where? From all these operational systems. Okay, and convert this data, transform this data in such a way that it becomes suitable for analysis. Okay, so to perform analysis. All right. तो अभी तक ये दोनों टर्म समझ में आए, व्हाट इज ऑपरेशनल सिस्टम एंड व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम? यस सर, ये ऑपरेशनल सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम का हेल्प से रन करता है ना डे टू डे बिजनेस नो नो एक्टिविटी? नो नो नॉट एट ऑल ऑपरेशनल सिस्टम इज अ सेट ऑफ सिस्टम. जैसे मैंने बताया, वो जो ऑपरेटर है, वो जो बंदा बैठा है टिकट काउंटर पे, ही इज वर्किंग ऑन द सिस्टम. इट इज पार्ट ऑफ ऑपरेशनल सिस्टम. वहां पे एक ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होगा. व्हेन यू बुक अ टिकट, वहां पे एक ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होगा. वो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होने के like because of that transaction, whatever data is captured, that data will be ultimately collected by information system. आया समझ में? यस सर. So you can consider that information system is working on the top of operational system. Okay, without operational system, information system cannot function, because जो भी data आ रहा है information system में, that is coming from operational system. But operational system can work very well without information system. Operational system के लिए information system की कोई जरूरत नहीं, because data कहाँ से आ रहा है? कोई कस्टमर से आ रहा है, कोई सप्लायर से आ रहा है. ओके, कोई अपना अगर बिजनेस पार्टनर है तो वहां से आ रहा है. ओके, सो डेटा इज कमिंग इनटू ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम ऑपरेशनल सिस्टम, जहां पे वो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होगा और बिजनेस रन होगा. बट ये बिजनेस रन होने के बाद अगर उसको मॉनिटर करना है, तो ऐसे बहुत लोगों ने टिकट बुक किया. ओके, देन ओवरऑल पिक्चर यू वांट कि ये मूवी कैसा परफॉर्म कर रहा है, कौन से सेक्शन में अच्छा चला. ओके, इंडिया के कौन से सिटी में ये मूवी कम चला. ओके, यू वांट इनसाइट्स, देन यू हैव टू गैदर द डेटा. दिस गैदरिंग डेटा कहां पे होगा? इंफॉर्मेशन सिस्टम में. समझ में आया अभी? हाँ सर. Okay, so you can say that information system works on the top of operational system. It will collect data from all the operational system. It will convert it into a form which is more suitable to perform analysis. So operational system is to run the business and information system is to monitor the business. That is clear now, everyone? Yes, sir. Okay, now from exam point of view, this is concept. From exam point of view, one important theory question: differentiate between operational system and information system. ऐसा question आता है. Okay, what are the differences? Differentiate between operational system and information system. एक बार समझ में आएगा कि information system और operational system में क्या फर्क है, then we'll get to know कि ये data warehouse कहाँ पे आया picture में. ठीक है? So now, would you like to note down? Yes, sir. Okay, so you create like two partitions in your copy, write operational system and information system, like this. Okay. So point number one, there are large number of differences, right? You may require one complete page at least. So difference number one. So first of all, we'll write what is the purpose of operational system and what is the purpose of information system. So write down the first difference. It is used to run day-to-day business activities. यहाँ पे operational system में it is used to run day-to-day business activities. Okay, opposite to that, one number here.
It is used to monitor the business. It is used to monitor the business. Okay. Point number 2. Okay, now operational system के अंदर जो data use होता है, whatever data you feed in, okay, ticket number, cost, cost per unit, total cost, जो भी सारा data हम use करते हैं operational system में, या तो वो जो बंदा बैठा है वो enter कर रहा है, that data is called operational data. Okay, so data used in operational system is called operational data. This data is called operational data. Okay. Against that, step point number 2 here. अभी हम यहाँ पे इसको डेटा नहीं बोलेंगे, यहाँ पे इसको हम इंफॉर्मेशन बोलेंगे. Okay, because that information is basically transformed data such a way that you can perform various analysis. Okay, तो उसको बोलते हैं strategic information. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? It provides strategic information. Okay. Okay, can we go ahead? Yes, sir. Okay, step number 3. Okay. Now we know that it is used to run the business. जैसे मैंने एग्जांपल भी बताया, तो यहाँ पे डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होना चाहिए? Data has to be organized such a way that very efficiently transaction should process. Okay, otherwise you have to stand in a long queue on the counter. अगर वो transaction एकदम slow process होगा. Transaction has to happen very fast. Within a fraction of second, transaction should get over. Okay, so यहाँ पे क्या लिखेंगे? Data is organized. Data is organized for efficient transaction processing. Data is organized for efficient transaction processing. Okay, तो उसके अगेंस्ट में यहाँ पे क्या आना चाहिए? Can someone tell me? डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होना चाहिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन सिस्टम में? Efficient analysis. Exactly, very good. Data is organized for efficient analysis. Data is organized for efficient analysis. Okay, तो आगे हम देखेंगे कि वो डेटा कैसे ऑर्गेनाइज करता है so that efficient analysis is possible. Okay, fine. Now, okay, return step number 4, difference number 4. Okay, ये ऑलरेडी आपने किया है. Okay, you already studied DBMS, बराबर? Yes, sir. हाँ, तो DBMS में आपने क्या किया था डेटा ऑर्गेनाइज करने के लिए? टेल मी. Tables. डायरेक्टली टेबल्स बनाया था क्या? टेबल बनाने के पहले क्या करते हो? रिसोर्सेस कलेक्ट करते ER मॉडल बनाते. हाँ, टेबल कौन से टेबल चाहिए वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए व्हाट यू यूज ER मॉडल, बराबर? तो ER मॉडल में क्या करोगे? ER मॉडल अप्लाई करके यू विल फाइंड आउट दीज आर द एंटिटीज, दीज आर द रिलेशनशिप, दिस इज प्राइमरी की, दिस इज 1 to 1, दिस इज 1 to many, दिस इज जनरलाइजेशन. वो सारे कंसेप्ट डाल के ER डायग्राम बनाओगे and then you convert that ER diagram into tables, isn't it? Yes. Right. So operational system uses ER model to organize data. Okay, it uses ER model to organize data.
तो उसके अगेंस्ट में यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 क्या आएगा? नाउ हियर कैन वी यूज ईआर मॉडल? Can we use ER model here now? No, sir. Okay, the reason is no. Reason is why? Why can't we use ER model here? Because ये system का purpose अलग है. We want to organize data for efficient analysis. ER model से organize करोगे तो it is suitable for efficient transaction processing. Okay, तो यहाँ पे हमें use करना है something called dimensional model. Okay, so it uses dimensional model to organize data. It uses dimensional model to organize data. ठीक है? Okay, difference number 5. Okay, now because in operational system we have organized data for efficient transaction processing, it is also called online transaction processing system. OLTP अगर आपने सुना होगा तो. It is also called online transaction processing system. Okay, because हमने डेटा ऐसे ऑर्गेनाइज किया है कि ट्रांजैक्शन एफिशिएंटली रन होगा, and because of that it is called online transaction processing system. यहाँ पे हमने डेटा ऐसे ऑर्गेनाइज किया है कि अच्छे से उसका एनालिसिस हो पाएगा. Because of that this system is also called online analytical processing system, OLAP system. Okay, समझ में आ रहा है पॉइंट बाय पॉइंट? Yes, sir. राइट. ओके, लिख के हो गया? Can you repeat fifth point? On which side? IS information side. हाँ, तो it is also called online analytical processing system. Okay, and why it is called online analytical processing system? उसका रीजन ऊपर ही है पॉइंट नंबर 3 4 में. पॉइंट नंबर 3 और 4 में हमने लिखा है कि डेटा ऐसे ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि अच्छे से उसका एनालिसिस हो पाए, and that's why it is called online analytical processing system. Clear? Yes, sir. Okay, point number 6. You can say difference number 6. Okay, now see ऊपर के डिफरेंस से ही हम आगे के डिफरेंस निकालते जाएंगे धीरे 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 धीरे. हाँ, देखो अभी यहाँ पे ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है. एक बार टिकट बुक करने के बाद कैन यू कैंसिल दैट टिकट बिकॉज ऑफ सम रीजन? Yes, sir. Yes. Okay, I can cancel my flight ticket. They also process your refund. Okay. In a company, suppose you, in a college, you are a student. Okay. Now you are in final year, for example, and then you pass out. Your data will be deleted from the student table and will be added into alumni table, right? Because now you are no longer a student. मतलब डेटा डिलीट भी होता है, अपडेट भी होता है, इंसर्ट भी होता है और रीड भी होता है इन ऑपरेशनल सिस्टम. बिकॉज ऑपरेशनल सिस्टम में हमें ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करना है. ओके, कंसीडर you have account in a bank. Okay, so when you have account in a bank, when you deposit some amount, your account balance is updated. Previous account balance is lost because it always reflects the latest balance, isn't it? So what I am trying to say is what type of data operations, what kind of operations performed on the data stored in operational system? Read होता है वो data. Once the data is available in the operational system, can we read that data? हाँ sir. Read होता है. Can you update this data? Yes, sir.
Can you insert new data? Yes, sir. And can you delete this data? हाँ सर। DBMS में SQL पढ़ा होगा जिसमें डिलीट ऑपरेशन भी है SQL में, राइट? वो डिलीट कर देता है डेटा। मींस द टाइप ऑफ ऑपरेशंस इन्वॉल्व्ड हियर इज insert, update, delete and read। सारे के सारे ऑपरेशन होंगे। इंसर्ट भी होगा नया डेटा, वो डेटा अपडेट भी होगा, हो सकता है डेटा परमानेंटली डिलीट भी हो गया, और रीड ऑपरेशन तो पता ही है, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, एसक्यूएल क्वेरीज। यहां पे क्या होगा? कैन यू इमेजिन यहां पे क्या होगा? हमारा पर्पस क्या है यहाँ पे? एनालाइज करना है। सो आर वी गोइंग टू डिलीट दिस डेटा? नो सर। नो। आर वी गोइंग टू अपडेट दिस डेटा? यस। नो। अपडेट भी नहीं करेंगे यहाँ पे। तो यू में आज अपडेट नहीं करेंगे तो लेटेस्ट डेटा कैसे मिलेगा, राइट? हमें लेटेस्ट डेटा भी चाहिए और पुराना डेटा भी चाहिए, बिकॉज हमको एनालाइज करना है, राइट? सपोज आज के दिन में सैमसंग ने 5000 मोबाइल फोन सेल किए। अगर ये 5000 रिफ्लेक्ट हो रहा है उनके सिस्टम में, इंफॉर्मेशन सिस्टम में, तो उनको पता कैसे चलेगा कि सेल बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? दे रिक्वायर डेटा फ्रॉम लास्ट 1 ईयर फॉर एग्जाम्पल। ओके, हर एक दिन का डेटा रहेगा कि इस दिन इतना सेल हुआ, इस दिन इतना सेल हुआ, आज इतना सेल हुआ। देन दे कैन अंडरस्टैंड, ओके धीरे धीरे ये मोबाइल का सेलिंग कम हो रहा है या ये मोबाइल का सेलिंग बढ़ रहा है। सो इफ यू वांट टू परफॉर्म एनी एनालिसिस, you always require previous data and current data also। समझ में आया? Is it clear? Yes, sir. And data is never deleted। कभी भी डिलीट मत करो, क्योंकि पिछले वाला डेटा कब एनालिसिस के लिए यूज में आ जाए, यू नेवर नो। ओके, तो यहाँ पे ऑलवेज कौन सा ऑपरेशन होगा? ऑलवेज रीड ऑपरेशन होगा। रीड एनालाइज, रीड एनालाइज, रीड एनालाइज। डिलीट कभी नहीं होगा। अपडेट होता है, आई विल गिव यू एग्जांपल लेटर ऑन। ओके, अपडेट रेयरली होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम कौन सा ऑपरेशन होगा यहां पे? रीड। इज इट क्लियर? हाँ Yes, सर। sir. ओके, तो आपने दोनों साइड पे पॉइंट लिखे कि नहीं लिखा? नहीं लिखा सर। Okay, so point number 6 in operational system, the type of operations involve insert, update, delete and read। Type of operations involve insert, update, delete and read। And on the other side, information system, most of the time read operation, most of the time read operation। Okay, you can write further, data is never deleted, data is never deleted and rarely updated। Data is never deleted and rarely updated। Okay, point number 7। अभी बिकॉज ऑफ दिस क्या होगा? यहाँ पे डेटा अपडेट भी हो रहा है, नथिंग बट यू आर रिप्लेसिंग ओल्ड वैल्यू विद द लेटेस्ट वैल्यू। और हो सकता है डेटा डिलीट भी हो रहा है। मींस इट ऑलवेज गिव्स यू लेटेस्ट पिक्चर। अभी कितना अकाउंट में बैलेंस है वो यहां से पता चलेगा, और अकाउंट में बैलेंस कैसे वेरी हो रहा है ओवर लास्ट 6 मंथ्स वो यहां पे पता चलेगा। क्यों पता चलेगा? बिकॉज यहाँ पे डेटा डिलीट कभी नहीं किया।
It means that it contains historic data and the latest data. Do you find historic data in operational system? Yes. Sir, Do can you, you please repeat the question? yeah, my question is, do you find historic data in operational system? No, sir. नहीं, because we always keep up to date values in the operational system. जैसे ही कस्टमर ने 5,000 रुपया निकाला, उसका अकाउंट बैलेंस डेबिट हो जाएगा फटाक से, and it will always reflect the latest balance. Whereas information system में यहाँ पे हमें रखना पड़ेगा historic data as well as current data. Okay, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? It contains only current data. It contains only current data. Latest value. यहाँ पे क्या आएगा? It contains current and historic data. Is that part clear? Historic data क्यों चाहिए? Why do we require historic data? Sir, for analysis. Yes, because without historic data, you will not be able to perform analysis. And that's why data stored in operational system is not suitable to perform analysis. Because उसमें खाली latest value है, पुराना value है ही नहीं. Okay? Okay, so point number 8. Now because of this क्या होगा? इसमें खाली current values है. चाहे कितना भी बड़ा database हो, the values are all latest value. यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? Historic. As time passes, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, क्या होता जाएगा? Size of the data Will increase. will go on increasing exponentially because you have to keep all historic data with you. यहाँ पे क्या होगा? Grow होगा. कब grow होगा? Only when you insert new data. Otherwise वो grow नहीं होगा. Right? जब नया कस्टमर आता है तो बैंक में एक नया कस्टमर का रिकॉर्ड होता है और एक नया अकाउंट खुलता है वहां पे. ओके, अदरवाइज डेटा डजंट ग्रो, isn't it? ओके, तो यहां पे साइज ऑफ डेटाबेस इज रिलेटिवली स्मॉल. ओके, यहां पे क्या होगा? वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा और वेरी ह्यूज डेटाबेस साइज. ओके, डेटा जाएगा टेराबाइट में, पेटाबाइट में. यहां पे इतना बड़ा डेटाबेस नहीं होगा. ओके, क्लियर है ना एवरी पॉइंट? Yes, sir. ऑल राइट, पॉइंट नंबर 9. ओके, यहाँ पे डेटाबेस का साइज भी रिलेटिवली स्मॉल है और अपना डेटा ऐसे ऑर्गेनाइज हुआ है कि ट्रांजैक्शन रन्स वेरी फास्ट. व्हाट इज द रिस्पॉन्स टाइम? रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है? व्हेन यू सबमिट द ट्रांजैक्शन, हाउ फास्ट इट इज एग्जीक्यूटेड, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्स टाइम. तो रिस्पॉन्स टाइम यहाँ पे माइक्रो सेकेंड में हो सकता है. ओके, माइक्रो सेकेंड. यहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल डेटाबेस इज वेरी ह्यूज. ओके, सो जब भी क्वेरी फायर करोगे, यहाँ पे भी क्वेरी फायर होगा, बट वो क्वेरी को रन होने में बहुत टाइम लगेगा बिकॉज यू आर परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ऑफ डेटा एंड दैट टू द डेटाबेस साइज इज वेरी ह्यूज. तो इसका रिस्पॉन्स टाइम कैसा होगा? पुअर इन अ सेंस द क्वेरी विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू रन. यहाँ पे क्वेरी विल रन वेरी क्विकली, isn't it? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? Response time is in terms of sub-second. Sub-second मतलब what?
Sub-second means what? The response time is in terms of sub-seconds. So sub-second means what? Within a fraction of second. यहाँ पे क्या होगा? Poor response time. Okay, in terms of seconds to minutes, depends. कितना complex analysis कर रहे हो उस पे depend करता है. Okay, so it will take seconds to minutes to run one query. DBMS में clarifier किया था ना? हाँ, DBMS में clarifier किया था ना? Yes, sir. हाँ सर. कितना फास्ट उसका रिजल्ट आता है? Do you have to wait for seconds or minutes? Milliseconds. It will be milliseconds, very fast. Okay, so response time is in terms of sub-seconds. यहाँ पे response time is poor, naturally poor. What is the reason? The reason is very huge database size यहाँ पे. Or you are performing very complicated analysis. It is not just updating one value or deleting something or inserting something. That's why it is like in terms of seconds to minutes. ठीक है? Okay, point number 10. Point number 10. Again, if we go back to this, कहाँ पे? OLTP और उसके भी ऊपर ER model या उसके भी ऊपर. Okay, when you design your database using ER model, DBMS में normalization पढ़ा किसी ने? ये सबने ऑप्शन में छोड़ दिया. हाँ, normalization पढ़ा? 2NF, 3NF, BCNF. हाँ, पढ़ा ना? हाँ, sir. Okay, what is the main reason for normalization? Why you want to perform normalization? Sir, to reduce the data redundancy. Exactly. Redundancy क्यों problem create करता है database में, DBMS में? सर वो 3 anomaly है ना, insert, update, delete. Correct. So data redundancy leads to anomaly of insert operation, delete operation, and update operation. क्या होगा? एक ही डेटा 4-5 जगह पे रखा है, तो एक जगह पे अपडेट हुआ, दूसरी जगह पे अपडेट नहीं हुआ, या एक जगह से डिलीट हुआ, दूसरी जगह पे डिलीट नहीं हुआ. Okay, so whenever there is data redundancy, okay, there is always a problem in DBMS because our purpose is to efficiently run transaction, and that's why we perform normalization. Now come to this other side, information system. Are we going to execute transactions in information system? No. No. Most of the time, which operation you are doing? Monitoring. अरे ऊपर देखो. Difference Read. number 6. Read. Read operation. Most of the time you are doing read operation. Now, if you are doing read operation most of the time, data एक जगह पे रखा है या 4 जगह पे रखा है, will it make any difference? Only read करना है, update delete नहीं करना है. Will it make any difference? In other words, data redundancy will cause any problem in information system? No, sir. No. Okay. In fact, it is good that the same data is available from this table also and that table also. Let it be. Okay. तो एक difference हम यहाँ पे लिखेंगे. It contains normalized data. कहाँ पे? यहाँ पे. It contains normalized data. Okay. So here we follow 1NF, 2NF, 3NF, BCNF. All those normal forms are defined here. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. It contains denormalized data. It contains denormalized data. Okay. Now, can you tell me what happens when you normalize? Normalization apply किया था ना?
2NF 3NF अप्लाई किया था, राइट? Yes. ऐसे टाइप के सम सॉल्व किए होंगे, एक रिलेशन दिया है एंड सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया है, कन्वर्ट दिस रिलेशन इनटू थर्ड नॉर्मल फॉर्म. हैव यू डन सच सम्स? Yes, sir. So what happens to the given relation when you apply third normal form? Are you getting my question? सर नए टेबल्स बनते हैं। नए टेबल्स बनते हैं, यू अप्लाई प्रोजेक्शन. ओके, एक ही टेबल को मल्टीपल टेबल में डिवाइड करना पड़ता है, देन ओनली देयर विल बी नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, देयर विल बी नो पार्शियल डिपेंडेंसी, राइट? 2NF 3NF की जो कंडीशन है, nothing but in DBMS, in operational system, when you perform normalization, the relation, the table is divided into multiple smaller tables, right? यहां पे क्या होगा? उसका उल्टा प्रोसेस, उसका उल्टा प्रोसेस, डीनॉर्मलाइज डेटा. अगर डेटा ऐसा अक्रॉस मल्टीपल टेबल स्टोर किया है, इट इज नॉट इजी टू रीड. व्हाई नॉट इट इज इजी टू रीड? टेल मी. अगर डेटा 3 टेबल में पड़ा है और मुझे रीड करना है, तो व्हाई इट इज नॉट इजी टू रीड? What if I want to read data from 3 tables simultaneously? What am I supposed to do? Are you getting my question? सर हिस्टोरिक डेटा भी होगा ना, तो एनालिसिस करने में दिक्कत होगी। No, no, no. My question is right now slightly different. If some data is okay, part में divide होके 3 टेबल में पड़ा है, तो why it is difficult to read this data? Or if I want to read this data, what I am supposed to do? Are you getting my question or सर not? डेटा का सीक्वेंस Okay, consider customers data. Customers data. Customer का एक कुछ पार्ट डेटा एक टेबल में है, दूसरा पार्ट दूसरे टेबल में है, तीसरा पार्ट तीसरे टेबल में है. Now I want to read complete customer data, everything. What am I supposed to do? We need to denormalize. हाँ, ऐसा ऐसा ट्रिकी आंसर मत दो. डीनॉर्मलाइज करना पड़ेगा. डीबीएमएस में क्या करोगे वो डेटा रीड करने के लिए, अगर करना है तो? जॉइन Join. You have to join the tables. Join पढ़ा है, Cartesian product, join, relational algebraic operation, right? हाँ सर। हाँ, तो join is the costliest operation in DBMS. DBMS में join is the costliest operation because it will combine every tuple of one table with all the tuples of another table and will apply then condition. ठीक है, that is very costly operation. अगर इतना costly operation information system में करने बैठोगे तो already you have a huge amount of data. कितना time लगेगा query run होने में? Are you getting something? यस। Is it clear? तो हम क्या करेंगे, कस्टमर का सारा डेटा एक ही टेबल में डाल देंगे. There will be only one table which contains all data of customer. भले ही वहां पे redundancy हो. Are you getting? Is this point clear? Sorry, I am not able to hear you. Your voice is too low. So if there is data redundancy in the table, so wouldn't it affect the analysis or give false information? See, anomalies or inconsistency कब आता है? Data redundancy is nothing but same piece of data is located at multiple places. बराबर? Inconsistency कब होता है? One of the copies gets updated and other copy remain unupdated. One of the copies get deleted and other copy was not deleted. That is inconsistency.
and that leads to all the problems. अगर data repeat हो रहा है, and if you are only reading it, then it is not going to create any problem. Okay, sir. Okay. तो यहाँ पे important point मैंने क्या बताया? If I consider customer का सारा डेटा एक ही टेबल में होगा. That's why it is called denormalized data. Okay, clear? Yes, sir. I can give you another example. Consider product table शायद आपने बनाया होगा in DPMs. Okay, product is supplied by some supplier. Okay, raw material उसका supplier, there is a supplier who is supplying some product to me, my company, and then I am selling that product to customers. Will you find supplier's address in product table? No, sir. Never. Product table में क्या रहेगा? Product ID, product का नाम, product का category, product का cost, बस. Then supplier का address in product table? Never. It will never happen, because as soon as in DWMS, as soon as you try to introduce those attributes of supplier in product table, there will be insert anomaly, delete anomaly, update anomaly. So you keep supplier table separate, and then you create one relationship table. This supplier has supplied this product, जहाँ पे खाली supplier का ID और product का ID रहेगा, isn't it? Yes, sir. Right. Why we are keeping this normalized data? Because if you mix this data in a single table, there will be a lot of problem in DPMs, because we want to run transactions. यहाँ पे क्या है? Product के table में सब data आ जाना चाहिए. तो किसने supply किया, वो supplier का address क्या है, okay, etc. So that is why it is called denormalized data. Okay, why I am emphasizing on this point so much? Because this point will be required when we define data warehouse. Data warehouse की definition में ये point जरूरी है. समझ में आया what is denormalized data? Okay. Point number 11. Okay. Earlier I already gave you example कि वो जो बंदा बैठा है काउंटर पे, who is booking ticket for you. In the organization, who is he? Rather say, what is he? Manager, CEO, MD? Huh? Are you getting my question? Are you getting my question? What I am asking? The person who is booking your ticket on the ticket counter, what is his position in the company? Employee. He is manager or board of director or managing director or CEO हो सकता है क्या? Tell me. सर सादा एम्प्लॉय हो सकता है ना. That's what I am saying, right? Okay, एक CEO बैठ के तो आपका टिकट बुक नहीं करेगा ना. So what I am trying to say is the users of the operational system are all ordinary employees in the organization. वो बंदा वहां पे बैठ के एनालिसिस करेगा कि ये मूवी मुंबई में कितना चला, बेंगलोर में कितना चला, दिल्ली में कितना चला, वैसा एनालिसिस वो करने बैठेगा क्या? The one who is on the ticket counter? No, sir. That is done by managers. That is done by CEO, board of directors. Okay. Are you getting? तो कौन यूजर है ऑपरेशनल सिस्टम का? ऑर्डिनरी एम्प्लॉय, जो एनालिसिस नहीं करते हैं, सिंपल ट्रांजैक्शन रन करते हैं. ओके. कौन यूजर है इंफॉर्मेशन सिस्टम का? Those who want to perform analysis of the business. They are at the managerial level. Okay, they are managers, board of directors, managing director, CEO,
They are users of information system. Are you getting? Is this point clear? तो यहाँ पे users are ordinary employees. Users are ordinary employees. यहाँ पे it is intended for top management. ओके समझ में आया? ओके हो गया लिख के पॉइंट नंबर 12. Point number 11 is clear now, all of you? Hello. Yes, sir. Yeah. Okay. So what about number of users? यहाँ पे कितने हैं और यहाँ पे कितने हैं? कहाँ पे ज्यादा number of users है? Operational system में कि information system में? ऑपरेशनल में. Operational system is used by so many employees. Okay, whereas information system is used only by managers and board of directors and CEOs. So obviously यहाँ पे less number of users है, यहाँ पे large number of users है, और ये सारे के सारे users जो है operational system के वो daily बहुत सारे transaction run करेंगे ना, right? तो data का access कौन सा system में ज्यादा है? डेटा का एक्सेस कौन से सिस्टम में ज्यादा है? ऑपरेशनल में ही. ऑपरेशनल सिस्टम. ओके सो यहां पे लिखो एक्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा इज वेरी हाई. एक्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा इज वेरी हाई. यहां पे उतना एक्सेस होगा क्या डेटा का? No. ओके तो यहाँ पे एक्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा इज लो टू मॉडरेट. एक्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा इज लो टू मॉडरेट. ठीक है, क्लियर? समझा अभी तक यहाँ के सारे पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. ओके सो कमिंग टू लास्ट पॉइंट. मैंने बोला ना पूरा पेज भर जाएगा. दिस इज लास्ट पॉइंट बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके ये पॉइंट अच्छे से याद रखना है. ओके दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस. ओके नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू. यहाँ पे सारे एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं, एक्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा इज वेरी हाई, डेटा इज नॉर्मलाइज, ट्रांजैक्शन रन हो रहे हैं. What is the type of usage of operational system? Try to understand my question. What is the type of usage of operational system? वो जो बंदा वहां पे आपका टिकट बुक कर रहा है, डेली अपना उसका जो ड्यूटी आवर्स रहेगा वो वहां पे बैठ के क्या करेगा? The person who is booking your ticket during his duty hours, what daily he is supposed to do? बुक अ One टिकट. transaction. Same thing. He does same thing every day. Now the same logic is applicable to all other employees also. Everybody is not booking ticket, but if you consider another user and he is using operational system in another way, but daily he will do the same thing, right? Isn't it?
Is this point clear? Yes, sir. उससे क्या होगा? What is the overall type of usage? It is repetitive usage. Same का same daily वही काम करने का. It is repetitive and most importantly, it is predictable. You can easily predict कि ये बंदा यहाँ पे बैठ के यही काम करेगा, तो उसको यही डेटा का यही पार्ट चाहिए, उसके ऊपर ये सही ऑपरेशन करेगा. It is all predictable, isn't it? So what is the overall usage of the operational system? What I say, I use two terms. What is the overall usage type of operational system? Repetitive and Repetitive. predictive. Very good. It is repetitive and predictable. Okay. Repetitive and predictable. Okay. अभी यहाँ पे मुझे बताओ, अगर एक सीईओ बैठा है इंफॉर्मेशन सिस्टम को लेके, डेली वो वही सेम का सेम एनालिसिस करेगा क्या? यहाँ पे कैसे होगा? इंफॉर्मेशन सिस्टम का ओवरऑल यूजेस कैसा होगा? Are you getting my question? ऐसा मोनोटोनस होगा जैसा वो एम्प्लॉय कर रहा है, डेली टिकट बुक कर रहा है, तो जो सीईओ होगा वो भी रोज का रोज वही एनालिसिस करता रहेगा, ऐसा होगा क्या? No. The managerial level people, they perform different analysis daily. आज ये एनालाइज किया, कल वो एनालाइज किया, आज ये ग्रोथ हुआ, ये डिक्लाइन हुआ. ओके, रोज उनका एनालिसिस अलग टॉपिक पे होता है. ओके, कभी सैलरीज को एनालाइज किया, ओके कितना इंक्रीमेंट देना है, कुछ बोनस देना है कि नहीं, इस बार 10% बोनस देंगे. ओके, वो सप्लायर के साथ अभी कंटिन्यू करना है कि नहीं बिजनेस, या हमें नया सप्लायर चाहिए. आर यू गेटिंग? अलग अलग दिन पे वो लोग अलग अलग एनालिसिस करते हैं, नॉट द सेम थिंग. बराबर? कैन यू प्रिडिक्ट आज वो कौन सा एनालिसिस करेंगे? कल ये एनालिसिस किया था तो? No, sir. It is not possible to predict. Means the usage of the information system is need based. Okay, it is called need based, also called ad hoc. Ad hoc. Five. Please mute yourself. Five. Hello. Hello. There is some disturbance. Yeah. Hello. Yeah. Okay. Is this point clear? It is need-based usage. Ad hoc. Okay. जैसे उनको लगा कि ओके अभी इंक्रीमेंट देने का टाइम आया है एम्प्लॉइज को, तो सैलरी में कितना रेज करेंगे? 5%, 10%. ये कैडर के एम्प्लॉय को 10% रेज मिलेगा, ये कैडर वालों को 2% रेज मिलेगा. इट इज नीड बेस्ड, एड हॉक. एक बार वो डिसीजन हो गया, चैप्टर क्लोज. वापस कल वही का वही डिसाइड नहीं करने बैठेंगे या एनालाइज करने नहीं बैठेंगे. ओके, सो इट इज नीड बेस्ड एंड अनप्रेडिक्टेबल. इट इज नीड बेस्ड एंड अनप्रेडिक्टेबल. इज दिस क्लियर? Yes, sir. This is very important difference. Okay, we will come back to this difference later on when we talk about how to design data warehouse. सर, That time yeah. ये ओएस का जो 13 पॉइंट है रिपीटेटिव एंड प्रेडिक्टेबल, इसके ये आएगा ना सर, ऑपरेशंस आर रिपीटेटिव एंड प्रेडिक्टेबल, ऐसा ना? Usage, overall usage. ओके. हाँ, overall, हाँ तो पूरा ऐसा लिखो. Overall usage of the system is repetitive and predictable. और यहाँ पे लिखो overall usage of the system is need based and unpredictable. बराबर?
सर और ये एडहॉक क्या है? एडॉक मतलब नीड बेस्ड। आज जरूरत है तो वैसा करो, कल कुछ अलग जरूरत है तो वैसा करो, कल कुछ और जरूरत है तो वैसा करो। एडॉक। ओके, डन। ऑल ऑफ यू डन अप टू दिस? लिख के हो गया? Yes, sir. Okay, now let us look at the two parts. अगर ऊपर से आप देखोगे ऑपरेशनल सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, इफ यू लुक एट द लेफ्ट हैंड साइड, यू आर अवेयर विद ऑल द थिंग्स। ईआर मॉडल पता है, इंसर्ट अपडेट डिलीट ऑपरेशन पता है, डेटाबेस का साइज भी छोटा होता है, क्वेरी रन करके देखा है, इट इज इन सब सेकंड, नॉर्मलाइजेशन करके देखा है। नथिंग बट इफ यू वांट टू इंप्लीमेंट ऑपरेशनल सिस्टम, you require traditional normal DWMs, बराबर? That's why you studied that in DWMS subject. ये सब पढ़ के हो चुका है लेफ्ट हैंड साइड का, राइट? Now look at the right hand side. Dimensional model, online analytical processing, most of the time read operation. You also want to keep historic data. The database is very huge in size. You want to keep denormalized data. Okay, that too only for managerial people. Okay, and the usage of the system is ad hoc and unpredictable. These things, what you have listed on the right hand side, cannot be implemented using normal database system. And here we require data warehouse for this purpose. तो ये जो left hand side का है, this system can be implemented using DBMS, traditional DBMS. But to have this type of properties, ऊपर से लेके पॉइंट नंबर 1 से लेके 13 तक देखो, ये जो सारी प्रॉपर्टीज है नॉर्मल डीबीएमएस में नहीं है। एंड हियर वी रिक्वायर डेटा वेयरहाउस टू इंप्लीमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। समझ में आया? Is this part clear why we require data warehouse? सर ये भी पॉइंट डिफरेंस में इंक्लूड कर दे क्या? करना है तो कर दो, but it is not actually a difference. We can say that information system has a different set of characteristics, different set of properties, and these properties cannot be offered by traditional DBMs. So we require data warehouse to implement information system. ओके, तो ऐसा करके एक छोटा सा नीचे कंक्लूडिंग रिमार्क लिखो कि ये डिफरेंसेस देखने के बाद क्या समझ में आया। ये डिफरेंसेस देखने के बाद ये समझ में आया कि इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉपर्टीज है, व्हिच इज द राइट हैंड साइड कॉलम, दिस कैरेक्टरिस्टिक्स कैन नॉट बी ऑफर्ड बाय नॉर्मल डीबीएमएस, and that's why we require data warehouse to implement this information system. Okay, लिखा? Done? Yes, sir. Okay, so as I said, this is one of the important theory question. Differentiate between operational system and information system. Okay, or one can also ask like this: what is the need for data warehouse?
Why do we need data warehouse? Okay, so you have to first differentiate between operational system and information system, and then you have to specify that okay, because of these unique characteristics of information system, which cannot be offered by DBMS, we require data warehouse to implement information system. Okay, so now we are in a position to define data warehouse. Data warehouse definition. Okay, can we proceed? Yes, sir. Anyone has any doubt, any difficulty, can ask me. Okay, then now we'll define data warehouse. Okay, so write down. It is defined as, data warehouse is defined as subject oriented, integrated, non-volatile, time variant collection of data in support of management decision making. Okay, this is how we formally define data warehouse. Okay, so I repeat, data warehouse is defined as subject oriented, integrated, non-volatile, time variant collection of data in support of management decision making. Okay, कुछ समझ में आ रहा है डेफिनेशन में? Anyone can tell me what you have understood from this definition? हिस्टोरिकल डेटा प्रेजेंट होगा सर. Okay, on what basis you are saying that? सर इंटीग्रेटेड एंड नॉन वोलेटाइल होगा ना, और टाइम वेरिएंट भी होगा तो. Okay, mainly because of time variant. Okay, there is a term here, time variant collection of data. That is possible if and only if you have historic data. अगर आपके पास खाली latest data है, then it is not time variant data. It is only the latest value. Okay, पिछले 6 साल का या 5 साल का आपको डेटा नहीं मिलेगा. If you have that old data available with you, then it is time variant collection of data. Okay, बाकी और क्या समझा? सर नॉन वॉलेटाइल है मतलब चेंज नहीं होगा ना? Yes. What is non-volatile? Non-volatile means data is never deleted once you insert it into data warehouse. And it is rarely updated, rarely. Okay, that's why it is non-volatile. Once data is put into data warehouse, it is there forever. It is never deleted. So it is non-volatile. Okay, और क्या समझा? इंटीग्रेटेड है मतलब वो आपने बताया ना, मतलब 3 टेबल वैसे रहेंगे, वैसा नहीं. No. That is wrong. That is wrong. वो आपका थोड़ा यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर पाए. Okay, I'll tell you what is integrated. Yeah, anyone else? I'll tell you what is integrated. Okay, definition का last part समझा क्या? In support of management decision making means what? What does this last part means? That is very easy. Last part of the definition is very simple actually. एनालिसिस करते हैं तो उसके Yeah. बेस पे जो टॉप मैनेजमेंट वाले एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करने के बाद वो कोई डिसीजन लेते हैं. जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि ओके दिस टाइम दिस कैडर ऑफ एम्प्लॉई विल बी गिवन 5% इंक्रीमेंट. दैट इज डिसीजन मेकिंग. और लेट्स से वी विल हैव टू फाइंड आउट अ न्यू सप्लायर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट. That is a decision making.
That decision making requires a lot of analysis first. They have to analyze all the data and then they come to some decision. Okay, so the last part of the definition says in support of decision making. It means that here we are not going to run any transaction. It is only analysis and decision making process. Clear? ये part clear है? Yes, sir. Time variant का मैंने बताया because it has historic data. Non-volatile is easy to understand because once you insert data into data warehouse, it is never deleted and rarely updated. Okay, now दो term बचे हैं. Integrated and subject oriented. Okay, this subject oriented is because of that denormalization. मैंने क्या बताया था denormalization में? एक ही टेबल में सब डेटा रहेगा. हाँ, एक ही टेबल में सब डेटा रहेगा. तो if you consider customer, all data related to customer will be available from customer table. If you consider product, then all data related to product will be available from the product table. And so on. Nothing but you can consider the collection of tables in data warehouse is like collection of subject. Customer is one subject, उसका सारा data customer table में. Product is another subject, उसका सारा data ये table में. Okay, so in this way it is like subject oriented. समझ में आया अभी? ओके, यहाँ पे उसको डायमेंशंस भी बोल सकते हो. हर एक सब्जेक्ट एक डायमेंशन है. तो बिजनेस में कौन से डायमेंशन हो सकते हैं? वन ऑफ द पॉसिबल डायमेंशन इज प्रोडक्ट, अनदर पॉसिबल डायमेंशन इज कस्टमर, अनदर पॉसिबल डायमेंशन इज टाइम. ओके, सो दीज आर द पॉसिबल डायमेंशन सब्जेक्ट. तो हर एक टेबल एक सब्जेक्ट है इन डेटा वेयरहाउस. दैट्स व्हाई इट इज सब्जेक्ट ओरिएंटेड कलेक्शन. Is this part clear? Yes, sir. Okay, तो पूरा का पूरा सब्जेक्ट एक ही टेबल में कवर हो जाएगा. That's why it is subject oriented collection and not transaction oriented collection. DBMS में जो अपना डेटा है ना, that is transaction oriented collection. All right. Okay, now coming to the last point of this definition, integrated. What do you mean by integrated data? Now in the beginning I said information system में data कहाँ से आता है? ऑपरेशनल सिस्टम से. और ऑपरेशनल सिस्टम मैंने बताया एक ही होता है क्या? नो सर. No. Even if you consider a very small organization, they have account section, production section, HR section, and so on. Every section has its own set of operational system. जहां पे वो अपना अपना काम करते हैं. बराबर. एचआर वाले अपना काम करेंगे, प्रोडक्शन वाला अपना काम करेगा, ओके, अकाउंट्स वाला अपना काम करेंगे. तो उनके पास अपना अपना खुद का ऑपरेशनल सिस्टम है जहां से डेटा कलेक्ट होकर इंफॉर्मेशन सिस्टम में आता है. बराबर. इट मींस दैट in the data warehouse or information system you are collecting data from variety of systems. Is it clear? Yes. Whenever you collect data from variety of systems, their internal format can be different. Yes, sir. Their internal representation will be different. Like कहीं से डेट रीड किया, डेट वो DDMMYY में होगा. कहीं से रीड किया तो वो MMDDYY हो सकता है. राइट? पॉसिबल? हाँ सर. अगर और सिस्टम लेवल पे घुस के बात करें तो कहीं पे ओके आपने पढ़ा होगा इंटीजर रिक्वायर्स हाउ मेनी बाइट्स? इंटीजर 4. okay 4 bytes if system is developed using Java. C programming भी यूज किया है ना आपने? Have you performed C programming? Yes sir. हाँ, तो C programming अगर किया है तो याद होगा integer requires 2 bytes. What I am trying to say, depending upon वो operational system कैसे डिजाइन किया है,
इंटीजर का रिक्वायरमेंट अलग हो सकता है, 2 बाइट्स 4 बाइट्स। डेट का फॉर्मेट अलग हो सकता है, MMDDYY या DDMMYY। हो सकता है कैरेक्टर एनकोडिंग कौन सा पता है आपको? कैरेक्टर, हाउ कैरेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन द सिस्टम? ये तो सिंपल क्वेश्चन है। हाउ कैरेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन द सिस्टम? ASCII values. ASCII वैल्यूज। और कोई पॉसिबल है ऐसा ASCII वैल्यू जैसा? जावा में कैरेक्टर कैसे स्टोर होता है, जावा प्रोग्राम में? नहीं पता? दैट इज यूनिकोड कैरेक्टर, इट इज एक्सटेंशन ऑफ ASCII कोड। What I am trying to say is, whenever you collect data from different sources, उनका internal format अलग-अलग हो सकता है। Now you want to put all this data into information system for analysis, चलेगा क्या? डेटा अलग-अलग फॉर्मेट में होगा तो? No, sir. No. So you have to convert all data into one standard format कि डेट होगा तो वो हमेशा DDMMYY में ही होगा, इंटीजर होगा तो वो हमेशा 4 बाइट का ही होगा, कैरेक्टर होगा तो वो हमेशा यूनिकोड कैरेक्टर ही होगा। Isn't it? You require that conversion. Yes, sir. That is nothing but integration. समझ में आया what is integrated data? हाँ सर। Okay. So I think now definition is clear. Okay, why it is subject oriented, why it is integrated, why it is non-volatile, and why it is time variant collection of data. And why the last part of the definition says in support of management decision making. It clearly says that here we are not going to run transactions. We are going to read data, we are going to analyze data, and then based on that analysis, the management will take some decision. Clear? Is the definition understood properly? किसी को डाउट है? Okay, so now we can proceed. सर एक बार वो इंटीग्रेटेड का वापस बता दो। Okay, integrated का लिख लो, ऐसा करो, integrated का लिख लो। Data warehouse collects data. Data warehouse collects data from variety of sources. From variety of sources. This data likely to have different formats, and different internal representations. Different formats and different internal representations. Data integration is the process of converting data into single standard format. Now clear? Is it clear?
Yeah, tell me. Hello, am I audible or not? Hello, am I audible or not? ऑडिबल है सर. अरे कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं दे रहा है, मुझे कैसे समझेगा? Yeah. Okay, you want to write example? What is integration? For example, converting all date values into MMDDYY format. Converting all date values into MMDDYY format. Converting all integer values into 4-byte integer. Converting all integer values into 4-byte integers. Representing all character values using Unicode. Representing all character values using Unicode, etc. Okay, these are some of the examples. Okay, done. Can we proceed now? Yes, sir. Okay, so now we are in a position to discuss system architecture. Okay, that is data warehouse system architecture. Okay, definition important. Data warehouse system architecture, very important and repeatedly asked question. Okay, 10 marks question, theory question. Explain data warehouse system architecture. That is important from exam point of view. Okay, so in data warehouse system architecture, we have total 6 components. Okay, there are total 6 components. Okay, first, data source component. Data source component. Okay, so write down data is collected into data warehouse. Data is collected into data warehouse from variety of sources. From variety of sources. There are mainly 4 types of data. There are mainly 4 types of data sources. First, production data. Production data. Okay, let me first list. You will not list right now. Production data, archive data, internal data, and external data. Okay, these are the 4 types of data sources in data warehouse architecture. Okay, what is production data? अभी तक हमने बात किया कि डेटा वेयरहाउस दैट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम में डेटा कहां से आता है?
operational system. Okay, the data which is coming from operational system is also called production data. Okay, so this is data collected from operational system. This is data collected from operational system and is the major source of data. Majority of the data is coming from production data. You can say almost 90% data is production data. Okay. उसके अलावा कहां से आ सकता है? These are the other three sources: archived, internal, and external. Okay. Have you written production data? Data collected from operational system is called production data, and it is the major source. Done? Sir, please wait. Yeah. Tell me when you are done. Sir, can you please? Sorry. Sir, can you please repeat? Production data. Yes. Data collected from operational systems is called production data. It is the major source of data. Okay, almost 90% data is coming from operational system. All right. Okay. Second, archive data. What is archive data? हाँ, किसी को पता है what is archive data? बैकअप लेते हो पता है बैकअप? हाँ सर. हाँ, ऑपरेशनल सिस्टम में जो डेटा होता है वो डेटा कहीं बिकॉज ऑफ एनी फेलियर लॉस ना हो जाए, इसके लिए उसको बैकअप लेते हैं. ओके, बैकअप. तो जो एक जमाने में ऑपरेशनल सिस्टम में लेटेस्ट डेटा था उसका बैकअप लिया था, एक जमाने में कभी तो लिया था, हो सकता है कि वो डेटा आज मुझे यूज में आ जाए फॉर एनालिसिस. इट इज नॉट करंटली बीइंग यूज्ड इन ऑपरेशनल सिस्टम. ऑपरेशनल सिस्टम में कभी तो एक जमाने में था और उस दिन उसका बैकअप लेके रखा था. नाउ इट इज बैकअप डेटा, दैट इज आर्काइव डेटा. हो सकता है कि वो बैकअप लिया हुआ डेटा मुझे कुछ एनालिसिस के काम में आ जाए. आर यू गेटिंग व्हाट इज आर्काइव डेटा? Yes, sir. So data stored in backup files, data stored in backup files of operational system, data stored in backup files of operational system is called archive data. Okay, clear? Yes, sir. Yeah. Okay, so what is the difference between production data and archive data? Production data is the data that is currently being used in operational system और वहां से fetch करके हमने data warehouse में डाला. Archive data is the data which was there in use at some point of time earlier. Okay, and that time it was stored into backup file, and that we are using today for some analysis. That is called archive data. Okay, now next is internal data. Now internal data क्या होता है? Now try to understand. This is slightly difficult to understand. What is internal data? Let's say I am working in accounts department as an employee. I am working as an employee, ordinary employee in accounts department. तो अकाउंट डिपार्टमेंट का खुद का अपना ऑपरेशनल सिस्टम रहेगा, बराबर. When I am working in accounts department on the operational system, the data that I am using, some other employee also must be using that data, right?
Hello. Are you getting what I'm saying? Sir, can you please repeat? Yeah, I repeat. That's what you just give me feedback whether you are getting or I'll repeat. What I'm trying to explain is internal data. For that, I'm first explaining. Let's say I'm working as an ordinary employee in accounts department. Okay, on some operational system, I'm working in the accounts section. The data, operational data that I am using. Okay, it is possible that some other employee working in account section is also using that data, right? Because we are working on the same operational system. मैंने एक कस्टमर का डेटा एक्सेस किया, वही डेटा दूसरा एम्प्लॉय भी एक्सेस कर सकता है. हाँ Is it सर. possible? Yes. Right. Okay. It means that the data in operational system may be shared, may be used by multiple users. Right? Yes, sir. Okay. Now while working in the account section, I found some information which I created, which I stored in my some personal file. मैंने एक छोटा सा एक्सेल फाइल बनाया है. ओके, मैंने एक छोटा सा एक्सेल फाइल बनाया है. वो फाइल के अंदर मैं क्या करता हूं, जब भी मुझे कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट डेटा इंफॉर्मेशन मिलता है किधर से भी, आई विल पुट इट इन माय एक्सेल फाइल. ओके, नाउ दिस डेटा व्हिच इज देयर इन एक्सेल फाइल ऑफ माय पर्सनल यूज, इज इट शेयर्ड बाय अदर एम्प्लॉइज? No, sir. No. Such data also may be very critical to perform some analysis. Because मैंने ऐसे ही तो नहीं स्टोर किया होगा ना वो डेटा. That data which is lying in my Excel file is also important because वो मुझे काम का लगा कुछ ना कुछ. That's why I have stored it in the Excel file. Though it is not shared and used by other employees, I am using it for some purpose. So हो सकता है कि वो डेटा कोई एनालिसिस में काम में आ जाए. Are you getting? Every employee may be having this type of data with them. हो सकता है, right? All such data which is stored by individual employees in their private file, which is not shared across various employees, is called internal data. Is it clear? हाँ सर. Okay. So write down what is internal data. Data stored in private files. Data stored in private files of various employees. Data stored in private files of various employees, which is not shared with other users, which is not shared with other users, may be useful for analysis, may be useful for analysis. Such data is called internal data. Such data is called internal data. Okay, clear? Is it clear? Yes, sir. Okay. Then the last one is simple. External data क्या होगा? Can you think of any external data? Huh? The data which is not created and used by the organization, but it coming from some other external entity is called external data. Some outside entity. Consider a college. Consider college. Now there is not only one engineering college. No, there are so many other engineering colleges.
द कॉलेज में है एफिलिएशन विद सम यूनिवर्सिटी, वहां से कुछ डेटा आया, कोई दूसरी कॉलेज से कोई डेटा आया, या दे हैव अ टाई अप विद सम फॉरेन यूनिवर्सिटी, वहां से कुछ डेटा आया. So that data is not produced by the college, that is produced by external agency, external entity, right? Samjha what is external data? Yes, sir. Right. Okay. So write down the data captured from external agencies such as business partner, business competitor, government body, etc. All of you understood what is external data? Sir, can you repeat? What? External data. Data captured from external agencies such as, अभी एक्सटर्नल एजेंसी इन जनरल क्या हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका कोई बिजनेस पार्टनर होगा, वहां से कुछ डेटा आया, या कोई कॉम्पिटिटर होगा, वहां से कुछ डेटा मिला, या गवर्नमेंट बॉडी होगा, ओके देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज टू फॉलो, वहां से कुछ डेटा आया, तो वो डेटा भी तो एनालिसिस में डालना पड़ेगा ना. दैट इज एक्सटर्नल डेटा which is not created or generated by the organization. It is generated by some other external body, right? Is it clear now? सर ये बिजनेस पार्टनर और बिजनेस कंपटीटर में फर्क क्या हुआ? अरे बहुत बड़ा फर्क है. Competitor and partner will help you grow in your business, and competitor is always trying to pull your leg because वो competitor है कि नहीं? अच्छा मतलब दो अलग अलग सर ऑर्गेनाइजेशन होंगे ऐसा? हाँ, बिजनेस पार्टनर क्या होता है, कोई दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपना टाई अप होता है. हाँ सर. ओके तुम्हारा मेरा थोड़ा मतलब मिलजुल के काम करते हैं, राइट? दोनों ऑर्गेनाइजेशन अलग है पर दोनों मिलजुल के काम करते हैं, तो दोनों का बिजनेस बढ़ेगा. बट कुछ ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो तुम्हारे कॉम्पिटिटर है, ओके वो मार्केट में कॉम्पीट करते हैं तुम्हारे साथ, तो उसका बिजनेस कब बढ़ेगा, जब तुम्हारा बिजनेस डाउन होगा, जब तुम्हारा कब बढ़ेगा, जब उसका बिजनेस डाउन होगा, तो उसको कॉम्पिटिटर बोलते हैं. They are not working in collaboration, they are working to let each other down, right? मार्केट में कंपटीशन हमेशा होता ही है, isn't it? तो वहां से भी कभी कुछ डेटा मिल गया, तो that data is also required for analysis. समझा अभी? Is it clear? या अभी भी डाउट है कुछ? Tell me fast. Clear, sir. Okay. Now what I am doing here is I will be drawing diagram parallelly. You will not draw right now. Okay, you will draw at the end. Okay, fine. So now let us continue. Second, data staging. Second component is data staging. Okay, so I am drawing diagram here. You will not draw it right now. Okay, when I ask you to draw, that time only you draw it. Okay, so what I am drawing is different. Okay, this is nothing but our
डेटा सोर्सेस, दीज आर डेटा सोर्स। अपना पहला कंपोनेंट। अभी ये सब जगह से डेटा मुझे कलेक्ट करना है और डेटा वेयरहाउस में डालना है। कैन आई डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट एंड पुट इट इनटू डेटा वेयरहाउस एज इट इज? नो। एज वी डिस्कस, डेटा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। दैट इज वन ऑफ द मेजर रिक्वायरमेंट। कुछ अलग छोटे मोटे बहुत सारे प्रोसेसेस करने पड़ते हैं बिफोर यू पुट योर डेटा इनटू डेटा वेयरहाउस। So there is one separate component in the data warehouse and that is called data staging. Data staging area. हम क्या करेंगे, ये सारा जो डेटा है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। So that is called data extraction. फिर मैं यहाँ पे टेम्पररीली स्टोर करूंगा डेटा। I will store data here temporarily in terms of staging relational database, or maybe in terms of flat file, or maybe in terms of Excel sheet, whatever comfortable. यहाँ पे मैं डेटा स्टोर करके क्या करूंगा, डेटा को मैं कन्वर्ट करूंगा into required form. That is called data transformation. Okay, so data integration is a part of data transformation. जो आपने एग्जांपल लिखा ना, converting date into MMPBYY or converting all character into Unicode character, that is part of data transformation. Apart from that, so many other transformations are there. Okay, so later on we'll see what are the other different transformations. But in short, what I am doing, all the extracted data is temporarily stored in the staging area. Where they are stored? Either in some relational database or in some flat file or in terms of Excel sheet, whatever is convenient. You store it temporarily and क्या करेंगे वहां पे temporarily store करके उसके ऊपर data transformation apply करेंगे, various integration. Okay, also called pre-processing. Okay. So what is the purpose of data staging area? Have you understood what I am saying? हाँ सर। So what is the purpose of data staging area? To hold and process the data. To hold data temporarily. Remember that. This is not permanent storage. यहाँ पे डेटा लेके आओ, यहाँ पे जो भी प्रोसेस करना है, प्री प्रोसेस करना है वो करो, and then you put this data into data warehouse repository. बराबर? तो यहाँ से डेटा जाएगा, उसको बोलते हैं डेटा लोडिंग. It is called data loading. और लोड होके कहाँ पे जाएगा? Now it is going into permanent repository. Okay, this is okay, EDW. Okay, तो ये जो 3 steps है, extraction, transformation and loading, is collectively known as ETL process. It is called ETL process. So what is ETL process? ETL stands for extraction, transformation, loading. और उसके लिए हमें क्या चाहिए? ETL process करने के लिए we require बोलो भाई, ETL प्रोसेस करने के लिए हमें क्या चाहिए? कहां पे होगा ये ETL प्रोसेस? डेटा स्टेजिंग. आर वी क्लियर? यस. क्या हो गया? एग्जॉस्ट हो गए क्या सब लोग? सर वो EDW क्या है? अरे वो जाते हैं ना, अभी ये पार्ट तो खत्म करो, हम आगे नहीं पहुंचे ना अभी वहां तक. हाँ सर। हाँ, स्टेजिंग एरिया समझ में आया? क्या पर्पस है स्टेजिंग एरिया का? यस सर। एंड व्हाट दिस एंटायर थिंग इज कॉल्ड ETL क्या होता है वो समझा? एक्सट्रैक्ट करो, स्टेजिंग एरिया में ट्रांसफॉर्म करो एंड देन लोड करो. सो ETL, एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन
लोडिंग। ओके, तो अभी लिख लो स्टेजिंग एरिया के बारे में, ड्रॉ मत करना अभी, अभी लिखो खाली डेटा स्टेजिंग, इट इज रिलेटेड टू ETL प्रोसेस, it is related to ETL process. Data is extracted, data is extracted from variety of sources, data is extracted from variety of sources which is temporarily stored, which is temporarily stored in staging area, which is temporarily stored in staging area in terms of staging relational database, staging relational database or flat files, or flat files. Various data transformations are applied. Various data transformations are applied on this data, to convert them into suitable form, to convert them into suitable form for analysis. The data is then loaded. The data is then loaded into a separate data warehouse repository. Data is then loaded into a separate data warehouse repository. यहां तक लिखा सबने? Yes, sir. कोई डाउट है यहाँ पे? समझ में आया? डेटा कलेक्ट किया, कलेक्ट मतलब एक्सट्रैक्ट किया, टेम्पररीली स्टेजिंग एरिया में रखा, वहां पे उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई किए टू कन्वर्ट दैट डेटा इनटू सुटेबल फॉर्म एंड देन उसको लोड किया. दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड डेटा स्टेजिंग. ETL डेटा स्टेजिंग तो कंपोनेंट है which is related to this process. The process is called ETL process. Okay, ETL is one of the very important processes in data warehouse. Okay, आगे कभी आप data warehouse के डोमेन में काम करोगे in industry, then you have to deal with ETL process 110%. Okay, so there are so many different tools available in the market that support the ETL process. So ETL is extremely important whenever you talk about data warehouse. Okay, इसलिए मैं बार-बार बता रहा हूँ. ठीक है? Clear? Now this data loading क्या होता है? बताओ जरा जल्दी फटाफट. What is data loading? अरे डायग्राम में दिख रहा है ना? What is data loading? सर वो सूटेबल फॉर्मेट का डेटा वेयरहाउस में लोड करने के लिए डालते हैं ना? Yes. तो जो डेटा प्री प्रोसेस करके रेडी हो गया, अभी एनालिसिस के लिए रेडी हो गया, उसको हम डेटा वेयरहाउस में डालने के लिए जो प्रोसेस करते हैं उसको बोलते हैं
डेटा लोडिंग, बराबर। एक्सट्रैक्शन क्या होता है समझा, जहां जहां से हमको डेटा जरूरत है, जिसको एनालिसिस करना है, वो सारा डेटा हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, देन स्टेजिंग एरिया में टेम्पोररी स्टोर करते हैं, उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके उसको रेडी करते हैं एनालिसिस के लिए। एक बार रेडी हो गया वो डेटा वेयरहाउस में स्टोर करेंगे, दैट लास्ट पार्ट इज कॉल्ड डेटा लोडिंग। दिस इज टिल हियर एवरीवन इज क्लियर? Yes, sir. ओके। एकदम शुरू में क्या होगा, जब डेटा वेयरहाउस नया नया बना है, तब डेटा वेयरहाउस के अंदर कोई डेटा है क्या? अरे डीबीएमएस की बात कर लो, जब टेबल क्रिएट की है डीबीएमएस में, तो उसमें कोई डेटा है क्या? नहीं है। जब आप इंसर्ट इनटू करके एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखोगे, तब डेटा अंदर जाएगा ना। यस। सिमिलरली जब ये डेटा वेयरहाउस बना, तब तो वो ब्लैंक रहेगा ना। वो मोमेंट पे सारा का सारा डेटा कहां पे है? वो मोमेंट पे सारा का सारा डेटा कहां पे है? स्टेजिंग एरिया में। अरे सारा का सारा डेटा स्टेजिंग एरिया में। स्टेजिंग एरिया में जो डेटा आपको डालना है उसको कैप्चर करो, वहां पे प्री प्रोसेस करो एंड इमीडिएटली उसको डेटा वेयरहाउस में डाल दो। वहां पे परमानेंटली स्टोर नहीं करते, दैट इज टेम्पोररी स्टोरेज, मैंने क्लियरली बताया। तो जब ये डेटा वेयरहाउस इंप्लीमेंट हुआ, सारा का सारा डेटा या तो ऑपरेशनल सिस्टम में है, विच इज करंट डेटा, बहुत सारा डेटा आर्काइव पड़ा रहेगा बैकअप फाइल में, बराबर। कुछ कुछ डेटा इंटरनल सोर्सेज में होगा एम्प्लॉइज के पास, और कुछ डेटा एक्सटर्नल एजेंसी के पास रहेगा, बिजनेस पार्टनर के पास रहेगा। अपना डेटा वेयरहाउस एम्प्टी है, ब्लैंक है। तो व्हेन यू कैप्चर डेटा फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम ऑल ऑपरेशनल सिस्टम, फ्रॉम ऑल आर्काइव फाइल्स, फ्रॉम ऑल बैकअप फाइल्स, बहुत सारा डेटा जमा हो जाएगा ना ट्रांसफर करने के लिए। आया समझ में? हाँ सर। That is called initial loading. Initial loading means when warehouse is implemented and you are transferring data for the very first time into it. Very huge amount of data you have to load into it. अभी क्या implement हो गया? Data warehouse is now functioning. All well, all is well. Everything is going on smoothly. When everything is going on smoothly, अभी क्या होगा? जब कोई डेटा लगा, ओके ये डेटा मुझे लगेगा एनालिसिस के लिए, ये डेटा लगेगा एनालिसिस के लिए, ये डेटा लगेगा, वो सारा डेटा पीरियोडिकली यू आर एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, पुटिंग इट इनटू स्टेजिंग एरिया, कन्वर्टिंग दैट डेटा इनटू सुटेबल फॉर्म एंड लोडिंग इट इनटू वेयरहाउस। दैट इज हैपनिंग पीरियोडिकली, टाइम टू टाइम। आज ये पार्ट लिया डेटा का, कल वो पार्ट लिया डेटा का, नेक्स्ट वीक में ये पार्ट लिया डेटा का। That is happening ongoing basis, periodically. Are you getting the two things different? हाँ, जब डेटा वेयरहाउस इंप्लीमेंट हुआ और डेटा फर्स्ट टाइम लोड किया उसके अंदर, तो वो तो बहुत सारा डेटा रहेगा ना। मोस्ट ऑफ द डेटा इज कमिंग फ्रॉम बैकअप फाइल्स एंड ऑपरेशनल सिस्टम। एक बार सब बराबर चल रहा है, तो डेटा कहां से आएगा? मोस्ट ऑफ द डेटा विल कम फ्रॉम ऑपरेशनल सिस्टम। जैसे जैसे ऑपरेशनल सिस्टम में ट्रांजैक्शन रन होते हैं, वैसे वैसे पीरियोडिकली यू कीप कैप्चरिंग द डेटा। आ रहा है कुछ समझ में? हाँ सर। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लोडिंग। फर्स्ट इज कॉल्ड इनिशियल लोडिंग। तो इनिशियल लोडिंग समझा क्या सबको? हाँ, इनिशियल लोडिंग समझा क्या सबको? यस सर। ओके। और सेकंड होता है इंक्रीमेंटल लोडिंग। तो इंक्रीमेंटल लोडिंग में क्या होगा? जैसे जैसे जितना जितना डेटा जहां पे मिल रहा है ऑपरेशनल सिस्टम में,
वहां से कलेक्ट करते जाओ पीरियोडिकली, ओके, पुट इट इनटू staging area, transform it and then load it into warehouse. कौन से लोडिंग में ज्यादा डेटा हम ट्रांसफर कर रहे हैं डेटा वेयरहाउस में? इनिशियल लोडिंग के इंक्रीमेंटल लोडिंग? इनिशियल। इनिशियल लोडिंग। इंक्रीमेंटल लोडिंग मतलब वो पीरियोडिकली होता है, एक फ्रीक्वेंसी डिसाइड करो कि ये डेटा मैं हर रोज कैप्चर करके डेटा वेयरहाउस में डालूंगा, तो एक दिन में जितना भी डेटा कलेक्ट हुआ that data will be transferred into data warehouse. So that is small amount of data because it is happening ongoing basis periodically. But initially जो loading होगा that is very huge. Okay, by the way, data warehouse कोई भी कंपनी implement कब करेगा? आज मैंने स्टार्टअप चालू किया, कल डेटा वेयरहाउस implement करूंगा मैं? Every company is initially startup, no? So if I have a startup today, next day I will start data warehouse. Huh? Tell me yes or no. No. No, obviously. आपके पास उतना डेटा ही नहीं है तो एनालाइज क्या करोगे? ओके, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑपरेशनल सिस्टम बढ़ रहे हैं, उसमें डेटा बढ़ रहा है, बैकअप फाइल में डेटा बढ़ रहा है, 1 साल 2 साल 3 साल, now you have sufficient amount of data in your backup files and operational system which can be actually used for analysis. तब जाके आप डेटा वेयरहाउस इंप्लीमेंट करोगे और वो एफोर्डेबल भी तो होना चाहिए। स्टार्टअप को डेटा वेयरहाउस एफोर्ड ही नहीं होगा। Okay, when it grows to certain level, now it can afford to have data warehouse. Affordability भी मिलेगा और उसके पास उतना डेटा भी रहेगा जो एक्चुअली एनालाइज करके कुछ काम में आ सके। Are you getting it? Is this point clear? Hello. Yes, sir. So by the time any company implements data warehouse, it has sufficient amount of data already in backup file and operational system. तो वो जब डेटा पहली बार ट्रांसफर करेगा वेयरहाउस में, that has to be very huge and that is called initial loading. एक बार initial loading हो गया, data warehouse is now properly functioning. Now periodically, ongoing basis, you capture some data, put it into data warehouse. You capture some data, put it into data warehouse. That happens in ongoing basis and that is called Incremental loading. incremental loading. Are we clear? Everyone understood the difference between the two? Huh? Yes or no? Yes, sir. Okay, तो क्या लिखा लास्ट में? What is your last statement? The data is then loaded into separate data warehouse repository. हाँ, तो अभी उसको कंटिन्यू करो. When data warehouse is implemented, and data is loaded into it for the very first time, when data warehouse is implemented and data is loaded into it for the very first time, it is called it is called initial loading. It is called initial loading. It transfers huge amount of data into data warehouse. It transfers huge amount of data into data warehouse. अभी तक जितना भी कलेक्ट हुआ था 4-5 साल में, जब से कंपनी चालू हुआ, जब वो छोटा सा स्टार्टअप था, तब से लेके आज तक जितना भी डेटा कलेक्ट हुआ बैकअप फाइल्स में और अभी जो ऑपरेशनल सिस्टम में है, वो सारा का सारा डेटा डेटा वेयरहाउस में डालो. दैट इज इनिशियल लोड. ओके,
Written? Huh? Done? हाँ सर, डन. Okay. Once data warehouse started functioning, once data warehouse started functioning, the required data is captured, the required data is captured periodically in ongoing basis, periodically in ongoing basis, and loaded into data warehouse. Data is captured periodically in ongoing basis and loaded into data warehouse. This is called incremental loading. This is called incremental loading. Done? Yes, sir. ओके, तो अभी आता है कंपोनेंट नंबर 3. अभी आता है कंपोनेंट नंबर 3, डेटा स्टोरेज. डेटा स्टोरेज. ओके, तो जैसे डायग्राम में आपको दिख रहा है कि स्टेजिंग एरिया में प्री प्रोसेस होने के बाद यूजिंग डेटा लोडिंग वी आर ट्रांसफरिंग डेटा इनटू a separate repository, and that is called data storage component. Okay, so write down data storage. It is a separate repository. It is a separate repository where all pre-processed data is stored. It is a separate repository where all pre-processed data is stored. It uses multi-dimensional model. It uses multi-dimensional model, or sometimes called dimensional model. Multi-dimensional model for efficient analysis of data. It uses multi-dimensional model for efficient analysis of data. ओके, यहां तक पिक्चर क्लियर है? क्या हुआ? सारा डेटा जो कलेक्ट किया प्री प्रोसेस करने के बाद, वो सारा डेटा यहाँ पे स्टोर होगा. यहां तक क्लियर है सर? Yes, sir. ओके. नाउ बिकॉज सारा का सारा डेटा यहाँ पे स्टोर्ड है, वी हैव कैप्चर्ड डेटा फ्रॉम एवरी कॉर्नर, ईच एंड एवरी पॉसिबल पार्ट. देखो ना, हमने 4 टाइप में डिवाइड भी कर दिया. प्रोडक्शन डेटा मतलब हर एक ऑपरेशनल सिस्टम से डेटा लिया, फिर बैकअप फाइल में जो डेटा था वो भी लिया, इंटरनल डेटा जो एम्प्लॉय का प्राइवेट डेटा है अपने खुद के फाइल में है वो भी लिया, एक्सटर्नल डेटा बाहर की एजेंसी से कोई डेटा मिलता है वो भी लिया. सारा का सारा डेटा लेके प्री प्रोसेस करके यहाँ पे डाला है. नथिंग बट द एंटायर व्यू प्रोवाइडेड बाय दिस डेटा इज एंटरप्राइज वाइड ऑर्गेनाइजेशनल व्यू. पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन का व्यू मिलेगा यहाँ से.
आ रहा है कुछ समझ में? हाँ सर. Everything, every detail that you require for this organization may be produced, generated by the organization, may be generated by some employee, may be generated by some external body. It is available here. So the view provided by this data is capturing the entire organization, and that's why it is called enterprise-wide data warehouse. कोई पूछ रहा था ना EDW क्या है? What is EDW? अभी मैंने क्या बताया? EDW क्या है? Enterprise-wide data warehouse. Why it is called so? Why it is called so? Because it captures all the details and it provides the view of the entire organization. Understood? हाँ सर. Okay. So write down the data stored in this component. The data stored in this component provides the overall view of the entire organization. Provides the overall view of entire organization. So it is called EDW. EDW. Okay, so E stands for enterprise-wide data warehouse. Enterprise-wide data warehouse. अभी यहां तक क्लियर है? Yes sir. Okay, but there is a problem. The problem is what? It is very huge and it covers so many details, so much that no single user will require a lot of data to perform analysis. वो करते करते पागल हो जाएगा पूरा डेटा का एनालिसिस करना, और जरूरत भी नहीं है. ओके, तो क्या करना चाहिए? It is very big and very complex. It is very big, very complex, and moreover, no single user or a group of user requires the whole data warehouse to perform analysis. Okay, अगर मैं accounts manager ले लूं, accounts manager, no, not ordinary employee, accounts manager, he has to perform analysis of accounts related data. उसको HR से क्या लेने देना है, right? उसको production के साथ क्या लेना देना है? Okay, if I consider HR manager, उसको एनालाइज करना है HR का डेटा, उसको अकाउंट के डेटा के साथ कुछ लेने देना नहीं है. Are you getting? Nothing but different users or different groups of users require different part of EDW and no user requires entire data warehouse. आई बात समझ में? हाँ सर. तो हम क्या करेंगे, ये जो इतना बड़ा EDW बन गया उसको हम अभी डिवाइड करेंगे छोटे छोटे पार्ट. हर एक डिपार्टमेंट के लिए एक एक, HR के लिए एक, प्रोडक्शन के लिए एक, मार्केटिंग के लिए एक, अकाउंट्स के लिए एक. हर एक को उसका पार्ट दे देंगे कि यू वर्क ऑन दिस पार्ट ऑफ द डेटा warehouse. That smaller subset of this EDW is called data mart. What it is called? Data mart. Okay, so what I'll be doing now, यहाँ पे ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल है. Okay, what I'll be doing, data mart 1, data mart 2,
data mart 3 and depends कितने मुझे डेटा मार्ट चाहिए, डेटा मार्ट नंबर n. ये जो डेटा है विच इज मल्टी डायमेंशनली और यूजिंग डायमेंशनल मॉडल उसको ऑर्गेनाइज किया है, वो डेटा इसमें डालेंगे, डेटा मार्ट्स में डालेंगे. Why we are doing so? Why we are doing so? Hello. सर क्योंकि पूरा डेटा किसी को भी नहीं चाहिए ना, इसलिए. Yeah, so the main reason is it is very big, very complicated, and no single user requires the whole data warehouse for analysis. That's why it is not actually broken down, no? It is not this also exists and this also exists. यहाँ से डेटा उठा के डेटा मार्ट में देंगे कि अकाउंट वाले को एक दे दिया, तुम इसको एनालाइज करो, तुम्हारा जो एनालिसिस करने का डेटा है वो इसमें है. फिर एचआर वाले को उसका डेटा दे दिया, दिस इज द डेटा दैट यू नीड टू एनालाइज इज हियर. तो हर एक को अपना अपना डेटा मार्ट बना के दे दिया. ओके, तो उससे क्या हो जाएगा, उसका साइज कम हो जाएगा, उसका कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगा, और जो डेटा जो यूजर को चाहिए वो उधर उसको मिल जाएगा. इट बिकम सिंपल. इज इट क्लियर? हाँ सर. Yes, sir. So this is also very important. ये सब्जेक्ट को वाइवा रहेगा, राइट? लास्ट में वाइवा प्रैक्टिकल एग्जाम रहेगा. तो अगर एग्जामिनर है तो आपको वाइवा में डेटा मार्ट पूछेगा ही पूछेगा, अगर डेटा वेयरहाउस का टॉपिक निकला तो. व्हाट इज डेटा मार्ट? डेटा मार्ट क्यों चाहिए? जब डेटा वेयरहाउस है तो डेटा मार्ट की जरूरत क्या है? समझ में आया बराबर? Yes sir. Okay, it is along with data storage only. See, it is not a separate component. वो कवर होता है डेटा स्टोरेज में ही, बिकॉज वहां पे भी वो डेटा स्टोर करता है, बट ओनली फॉर अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. So view provided by data mart is only restricted or limited to one department, whereas view provided by EDW is global view. पूरे ऑर्गेनाइजेशन का व्यू EDW से मिलेगा. डेटा मार्ट से क्या मिलेगा? डिपार्टमेंट का व्यू मिलेगा, छोटा सा, लिमिटेड टू वन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. इज दिस पार्ट क्लियरली अंडरस्टूड? Yes, sir. ऑल राइट. सो लास्ट में क्या लिखा? व्हाट इज द लास्ट थिंग यू हैव रिटन? So it is called EDW. Okay, enterprise wide data warehouse. Okay, it is too big. It is too big and very complex. It is too big and very complex. Moreover, no single user needs entire data warehouse for analysis. No single user needs entire data warehouse for analysis. Therefore, data from data warehouse is derived into data marts. Therefore, data from data warehouse is derived into data marts. Each data mart is department specific. Each data mart is department specific. .
and provides view of individual department. And provides view of individual department. यहां तक क्लियर है सब कुछ? Is everything clear till here, till this point? Yes, sir. Okay, तो अभी प्रॉब्लम ये है कि टाइम अप हो चुका है, तो वी हैव टू स्टॉप हियर एंड वी हैव टू कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स. यहां तक अभी तक किसी को कुछ डाउट है कोई भी पॉइंट में तो बताओ. Okay, so I think everything is very simple and clear. Okay, ठीक है. And do not worry about this diagram. This diagram will remain as it is. You need not draw it right now. ये पूरा डिस्क्रिप्शन खत्म हो जाएगा 6 कंपोनेंट का, उसके नीचे ये डायग्राम निकालना. Okay, so this diagram will not go anywhere. Okay, it will remain as it is in my notes here only. So next time when I share my screen, again you will be able to see this diagram, and I'll continue from this diagram onwards only. Okay, is clear? Everything is clear? Yes, sir. Okay, so we'll stop here today.